We live in an age of science. In the age of science, we try to find a reason for every phenomena. Science is an ongoing journey in which things are invented and discovered every step of the way. But there are certain occurrences that cannot be fully explained by science yet. In this documentary, we will meet ordinary people experiencing extraordinary phenomena. And we will explore both the science and spirituality behind meditation. To examine the spiritual side of meditation, we will meet a guru who is not only devoting his life to cure people, but also believes that yoga is not just a physical exercise. He claims that his powerful lesson was taught to him by his guru, Sri Gangai Nath Ji. And to investigate the scientific side, we will speak with the scientists, doctors, and professors. Meditative practice is not something in the mind, some wishful thinking or something. Some people tend to think in these terms, but it goes to the very core, very bottom, very foundation of our physiology, which is the genetic material. My name is Jayan Goswami. I am not affiliated with any association shown in this documentary. I created this documentary to present an unbiased investigation. We started our journey at a city in northwestern India called Bikaner. I grew up in this city, and that is where I came across this unconventional approach to yoga. We left Bikaner at around 6 in the evening to visit an ashram where hundreds of people practice meditation. Next day began in a beautiful sun city, Jodhpur, the land of kings and forts. After a shaky drive over windy roads, we reached to a very peaceful place, just outside the rush of downtown Jodhpur, to talk to people who believe that meditation is curing them. The Adhyatm Vigyan Ashram, a family in which 3 out of 4 are HIV positive and believe that meditation is helping them. हाँ जी, मेरा नाम खियाराम डूडी है। मैं ग्राम कागल का रहने वाला हूँ, भोपाल का तहसील जोधपुर। मुझे HIV पॉजिटिव है। हॉस्पिटल में भर्ती हुआ 2008 को, मुझे पता चला, चेक करवाया राजस्थान हॉस्पिटल में जोधपुर। वहाँ से रिपोर्ट आई 3 दिन से। फिर बीकानेर 18 तारीख 11/2008 को बीकानेर में दीक्षा ली गुरुदेव जी की। जीवनाम जी सर ने बताया, मेरे जीजा जी लगते हैं, वो जिप से अपनी जिप से लेकर गए वहाँ से दीक्षा लेके 25 तारीख को और दीक्षा ली, बच्चे बच्ची घरवाली ने सब ने। उससे हम गुरुदेव से जुड़े हैं उस दिन से। 18/11/2008 से वो आज तक रोज़ ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करता रहूँगा। और जोधपुर का रहने वाला हूँ। मैं भारतीय नौसेना में कार्यरत था। 22 अप्रैल 2008 को मैं रक्तदान के लिए गया, तो वहाँ पे मुझे HIV पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ। उसके बाद मैंने जे हॉस्पिटल और 1-2 हॉस्पिटल में और टेस्ट करवाया, वहाँ पे भी मेरा HIV पॉजिटिव आया। We spent a day meeting and interviewing people while visiting the Jodhpur ashram. At night, we left for Ahmedabad to meet the man behind the ashram to learn about his special yogic teaching. The next morning, we arrived in Ahmedabad. मैं जो मंत्र देता हूँ उससे साधक की कुंडलिनी जाग जाती। समझे? जैसे आप नवरात्रि में पूजा करते हैं दुर्गा की,
सीता कह दो, राधा कह दो, पार्वती कह दो। हम योगियों ने उसको कुंडलिनी नाम दे दिया। और रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में, बेसमेंट में, सैक्रम में 3.5 आटे लगा करके दुब को अपने मुंह में छिपाए रहती है, दबाए हुए रहती है, गवर्नमेंट पोजिशन में रहती है। मैं जब दीक्षा देता हूँ तो वो जाग जाती है और सीधी खड़ी हो जाती है। भारतीय योग दर्शन में योग के 8 अंगों का अनुष्ठान बताया है पातंजलि ऋषि ने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध्यान और समाधि ये सूक्ष्म अंग। जागृत कुंडलिनी सारी योगिक क्रियाएं स्वयं अपने अधीन करवाती है। जितने भी सिस्टम्स हैं, सारे सिस्टम्स को एक साथ स्टिमुलेट करके डेवलप करती है। According to Hindu philosophy, each human being has a feminine energy force, known as the Kundalini. Kundalini is interpreted as a snake which resides in a dormant state inside the largest and the lowest vertebrae called the sacrum. When Kundalini releases its tail from its mouth, this state is considered to be awakened state. In awakened state, Kundalini starts moving upwards, gradually penetrating and awakening different chakras located in different parts of the body. It is believed that Kundalini can be awakened in different ways, including an initiation by a spiritual guru. Hindu philosophy is not the only one that mentions the concept of Kundalini, but in fact, it has also been mentioned by the history of other countries, including ancient Egyptian pharaohs. मैं 2 साल से गुरुदेव के मंत्र दीक्षा लेने के बाद योग कर रहा हूँ और योग क्रिया आप खुद की खुद होती है, मैं उसके कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ और उससे मेरे को खूब आनंद मिलता है और मेरा पारिवारिक जीवन भी इससे बहुत बढ़िया चल रहा है। मुझे कोई दर्द भी नहीं होता है और हम सुखी हैं। मेरे जो योगी क्रिया हो रही थी वो अपने आप हो रही थी और मुझको मालूम था ये किस प्रकार से हो रही है और मैं रोकना चाह रहा था, लेकिन फिर भी ये योगी क्रिया रुक नहीं रही थी। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, लूज मोशन, वेट लूज और बुखार आने लगा और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। तो दिनों दिन मेरी तबीयत गिरने लगी। तो मुझे 27 मई 2008 को एक मेडिकल असिस्टेंट अर्जुन सिंह जी मिले। उन्होंने मुझे गुरुदेव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप इस तरह से ध्यान करोगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैंने बोला कि भाई डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं इसका कोई इलाज नहीं है, तो इस फ़ोटो से क्या होगा। लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मौत सामने खड़ी थी, तो मैंने फ़ोटो से ध्यान करना शुरू किया। 15-16 दिन बाद में मुझे स्वत प्राणायाम होने लगे और फिर तरह तरह की योग क्रियाएँ, आसन, बंद मुद्राएं अपने आप होने लगी और उससे मेरा स्वास्थ्य ठीक होने लग गया। अक्टूबर में मैंने दीक्षा लेने के बाद अक्टूबर 2009 में वायरल लोड टेस्ट करवाया, जिसमें मेरा वायरल लोड 4,85,591 था। जब डॉक्टर साहब ने जब मेरी रिपोर्ट देखी तो उन्होंने बोला कि आपका वायरल लोड बहुत ज़्यादा है और आपको कभी भी कोई अटैक आ सकता है और उससे आप फिर रिकवर नहीं होगे। तो उन्होंने मुझे दवाई लेने के लिए एडवाइस किया और उन्होंने मेरी केस शीट पे वो दवाइयाँ लिख दी। तो मैंने गुरुदेव को बोला, उनको डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब मैं ध्यान कर रहा हूँ और उससे मुझे पता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ और मैं किसी तरह की दवाई नहीं लूँगा। तो उन्होंने बोला कि आप दवाई लो या मत लो, मैं आपकी केस शीट में लिखूँगा। तो उन्होंने मेरी केस शीट में दवाई लिख दी। उसके बाद मैंने ये अनविलिंगनेस टू ट्रीटमेंट का फॉर्म भर के और डॉक्टर साहब के साइन करवाए कि भाई मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा हूँ, किसी तरह की दवाई नहीं ले रहा हूँ। उसके 9 महीने बाद में मैंने अगेन रिपोर्ट करवाई, ये अपना जुलाई 2010 को। तो उसमें मेरा वायरल लोड 1,61,000 आ गया था। मतलब बिना कुछ दवाई लिए ध्यान से 3,24,000 मेरा वायरल लोड रिड्यूस हो चुका था। To examine how meditation biologically affects our body, we flew to California. One of the things we've found that I think is very intriguing with the effects of meditation is the changes that we talked about with
expression of cytokine genes in the tissue. Ultimately, a lot of the different ways in which psychological states are translated into physical states in the body have to do with whether genes in our cells are either being turned on or expressed more, or being turned off or decreased in their expression. Deep down, one of the things that differentiates human beings from any other living organism is their genes. Genes are the unit of inheritance. They also act as on-off switch for inheriting and controlling various factors in the span of life. Scientists have observed the changes in the genetic expression induced by meditational practices. In the studies that we did in people who were overweight, looking at what was happening in the fat tissue when they added meditation to the kind of diet and exercise program that they were getting, was that we found that some of the genes that are involved in inflammatory responses that may have a whole set of ill effects on their health, those genes were being expressed less in the group that was getting meditation compared to the group that was just getting the standard diet and exercise. So this was, to me, a very exciting finding, showing potentially connections between what people were doing with a meditation practice and what was happening actually in the tissues, in the fat cells, in the expression of these genes involved in inflammatory responses. Our next stop is Oslo, Norway. We've taken 10 people who had learned a comprehensive yogic program, which includes gentle yoga postures, powerful breathing exercises called pranayama, and a very powerful breathing exercise called Sudarshan Kriya, which includes also meditation. So this is a 2-hour program which is done once a week. What we've done is that these 10 people, they participated in this program 2 days in a row, and then on 2 other days, as a control regimen, instead of doing this, they did a control program where they went for a walk in nature and they listened to relaxing music. And then before they started these practices, either the yogic program, yoga, breathing, Sudarshan Kriya, and meditation, and also afterwards, we took blood from them. And then from the blood, we isolated the immune cells in the circulation, and we compared the gene expression patterns before and after the practice or the control regimen. Based on this analysis, we found that there were approximately 4 times more genes which were affected by this yogic program, this meditative program, compared with the control regimen, suggesting that this yogic program, meditative program, first of all, has significant effects at the gene expression level. So the effects go actually to the very basis of our physiology, to that blueprint, the expression of that blueprint. And secondly, that the effects are more than light exercise and relaxation. We were very intrigued with this result, and now we are engaged in doing follow-up studies. मानसिक रूप से भी पहले तो सर मुझे ऐसा लगता था कि अभी मैं बचूंगा नहीं, लेकिन अभी बिल्कुल कभी भी मेरे माइंड में ये आता ही नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम थी या मुझे ये बीमारी है तो क्या होगा। और अभी मुझे डिटेक्ट हुए लगभग 6 साल हो गए हैं। मेरी वाइफ आज भी नेगेटिव है। अभी डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि भाई 6-7 महीने बाद में वो भी पॉजिटिव, लेकिन इनके आज भी नेगेटिव है। मैं हर 6-7 महीने बाद में टेस्ट करवा रहा हूँ। तो इस ध्यान से ऐसा कुछ हो रहा है कि उससे आगे भी नहीं मतलब फैल रहा है।